Assalamualaikum everyone and welcome to a tutorial about how I made this drawing picture into this portal. So let's start. Okay, so I'm gonna start talking in English, and whenever I see that and I don't have words, I'm going to go rude. I'm just doing this for myself. Okay, so how did I create this going picture into a Doctor Strange type thing, in which my hand is going into another dimension and coming out of it, and I'm just surprised in this picture. So I'm sweating a lot because I didn't turn on the fan. Production quality is something. Okay, so अब हम नीचे आते हैं, and this is the result, of course, and we'll not just talk about the result at first. We'll go through the basic picture, and again I'm just making this tutorial because I just posted this picture in a GFX mentor group, and many people wanted to learn how I made this. So I thought, why not? I haven't done such thing before, and I didn't have anything better to do. So let's start. This is the base picture with my hand just going outwards. So the basic concept was that I had to remove this hand from here and make it come from the other side. पहले सबसे आपको ये चीज़ करनी है. I'll be doing this much quicker. It is a really long session, I know, if I go into the details, but I'll be just going through the outline so that you have an idea, so that you can make this yourself. First thing I did was to separate me from the background. The reason I did this, I'll talk it about later in this video, but let me tell you how to separate yourself from the background. You just have to do is, and let me just make a copy of this layer. This is a background copy, name it whatever one or whatever. You just have to do is to go to a selection tool, your quick selection tool, and go to select subject. It will do a good job, a well enough job to select your subject, and you don't have to go all through that. Because it's a manipulation technique, so you don't have to be also perfect. Just make it real, make it feel good. This selection is good, but as you can see, it didn't select some chair stuff and this stuff, the leather. So you have to go and like this one, this patch, and select it out. You have to select out me and the chair, or whatever you have in the subject. In your case, it will be okay. After selecting it, you just have to press shift backspace, and a fill option will come up. You have to go on the content aware option and click OK. So it will fill according to its surroundings. It will just grab some pixels and try to make it disappear. Okay, it's just what Adobe does itself. As you can see, Photoshop did a well enough job, but what you will have to do after it is that, keeping this selection here, you just have to remove all the imperfections that Photoshop needs. So I'll go to a clone stamp tool and just select something from here from the wall and just paint it out. I'm just trying to explain what I did here. I just painted this whole thing again and just matched the wall. Okay, why did I do this? I'll just explain in a bit. So this was how much I made myself disappear. Okay, I'm just going back to my channel. I just saved my selection. Whenever I press Control and click, it will just pop up. Okay. So layers, I'm going back to my layers. I just made myself disappear. This is the first portal. This is the first portal. How I made this. We'll go step by. So if I just created a vector object. This portal wasn't imported. This portal isn't a PNG that I used. This was created from scratch. So I created an oval just to give it a dimension. I created it slimmer. In the fill options, I went and added a gradient. Yeah, I added a radial gradient here just to make it feel that it's hollow from the inside and it is getting from darker to lighter tone. कि वो feel हो कि वो एक सुराख बना हुआ, ठीक? ये इसके इन तीन कलर से मैंने इसको शो किया कि इसको fill किया, ठीक हो गया? The next thing I did was to add some effects. I just showed you how I made this vector. These are just the same vector with a fill only, no stroke.
Okay, so I'm just going to delete that because yeah. So the next thing I did was double click here and go into blending options and add a stroke. The stroke here is like the white line. It is really subtle, but it gives you a concept of the shine of the portal. This outer glow was to make this thing, the glowy thing. Okay, so basically just I tweaked with the settings, and if you know how to use an outer glow, you will just. This tutorial, I should mention that this tutorial is not for beginners. That I am not going to explain what is an outer glow, what is a stroke. I'm just going to explain what I used in the whole video. Okay, these are how I made these two portals. These two portals are not complete yet. When I made these portals, I didn't like connect it to it. Like it had something missing. So I just made a ring an outer ring on the similar ring using vector selection tool, and just going to make a vector object and turning into a stroke and making it like this. If you just increase the stroke, it'll give you a ring. Okay, I just made that ring, and to make it more pop, I just made it glow so that it blends more. So what setting I did here was definitely I didn't use any kind of blending options. I just made it white and it kind of suited. Okay, so the next ring I just copied and pasted it, and I used color overlay and outer glow to make the other ring. Okay, so these covered our portals. Why did I make myself disappear from the photo itself? Why did I do that? Okay, so you have to understand this, that I wanted to use some puppet warp tools around here. So if I warp anything, I'm going to use the puppet warp on it. So if I use the puppet warp thing, right, this, so whenever I warp, and whenever I warp, now what you can see right here, if I zoom in, I only displace the subject. I am not displacing the wall. Okay, so मेरा कॉन्सेप्ट ही ये था कि मुझे इसका हाथ सिर्फ अंदर लेके जाना है. अगर मैं यहाँ पे पुपेट वार्प वैसे यूज करूंगा तो उसमें ये जो पीछे मेरी ये दीवार है उसमें भी वार्प हो जाएंगे, और उसमें अगर वार्प होंगे तो वो इफेक्ट वो वैसा नहीं लगेगा. तो अगर मेरी दीवार उसके साथ अंदर खींच रही है तो वो बनेगी, मेरा सिर्फ हाथ खींचना चाहिए. ठीक हो गया. तो मैंने इसलिए अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट पहले से अलग किया था क्योंकि मैंने इस पे इफेक्ट्स लगाए. So what I did here is just use the puppet warp and put 2 points here and some points around the body so the body won't move, and I just drag this part out so that it kind of looks like it's stretching in, and it gives it a more realistic look. When I stretch it out, I had some additional part after the portal, so I just cut that part and put that here so it looks like it's coming out from the other side of the portal. Before this, I just cut my hand and put it on another layer. You can see this is my hand, and I just put it on another layer. Just cut it and put here and just used mask on it. Okay, so after I made these portals, currently good looking portals, but what will sell the effect? Every time you make a photo manipulation, be careful about the lightings and the shadows. I didn't do a perfect job because I was just playing around and not making it for anyone professional, anything professional. So I didn't care as much on the little details, but you should care about the little details. So I just made another adjustment layer, a red adjustment layer. From here you can go and just click on solid color and you can make an adjustment layer. So I just made it, and after setting it to a red color, because my portals have a red or a red light, so I just started painting where I thought that there would be a red light. Okay, so I painted on these pen and other stuff by using a brush, by using a mask. Of course, I just set the fill of the layer to 25% so that it just settled. When I did that, it didn't seem real to me, so I just added a gradient map. What did a gradient map do? So when I open this gradient map, I just put left side पे आप रखोगे तो ये lights में आ रहे हैं, और right side पे आप जो रखोगे वो dark में वही color देगा. ठीक है, तो इससे मैंने ये एक ओवरऑल लुक दिया कि मेरे पूरे कमरे में I have red lights all around. ठीक है. Then I use the mask
to paint out some stuff that I thought where that intensity should be high, I painted that more, and where the intensity should be low, I painted that out, I erased that. Okay, I think so that you should know how to use a mask. Okay, so the next thing is levels. मेरे कमरे में क्या था कि यहाँ से वाइट लाइट आ रही थी बहुत सारी, ठीक है। अब वाइट लाइट और ये पोर्टल कुछ मैच नहीं थे मेरे पास, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से लेवल्स बनाए, और इन लेवल्स में मैंने असल में क्या किया है कि अगर मैं इस मास्क को आपको डिसेबल करके दिखाऊँ, ओके, सो इफ आई डिसेबल दिस मास्क, तो ये मैंने एक लेवल की लेयर बनाई थी, लेकिन मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, आई डिडंट कंसीडर दिस पार्ट, आई जस्ट वाज लुकिंग एट दिस पार्ट कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, क्योंकि मैं उसको बाद में मैंने कर ही लेना था, मास्क आउट कर लेना था, तो मैंने उस हिसाब से उसमें थोड़ा सा डार्क ऐड किया इस राइट साइड। This level layer adjustment layer you can also create from like this option। तो ये हो गया। फिर अब मैंने क्या किया कि ये हमारा हो गया, हाँ ठीक है। मैंने क्या किया कि ये जो मैंने फोटो फिल्टर ऐड की, ये मैंने सबसे एंड पे किया, क्योंकि मैंने एक ओवरऑल एक फील देना। अब जो हमारा आर्म है, आप खुद देख सकते हो कि ये बहुत ही फीका है और इस पर कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये अलग एक लेयर पे था, और क्योंकि ये बिल्कुल उसमें से एक हमारे पोर्टल में से बाहर आ रहा है, तो इसकी लाइटिंग बिल्कुल डिफरेंट इफेक्ट होगी। तो मैंने इसके लिए यही सारी सॉलिड कलर लेयर बनाई, ठीक है, लेकिन इन सब को इसके साथ क्लिक कर दिया तो सिर्फ ये इसके ऊपर इफेक्ट कर दिया। एक रेड कलर की सॉलिड कलर लेयर है, उसको पेंट आउट किया इस हिसाब से कि वो लगे कि इसकी लाइट इसके ऊपर आ रही है। ब्लैक कि लगे कि मेरा ये जो हॉलो अंदर से ये जिसमें से ये बाहर आ रहा है मेरा हाथ, वहाँ पे डार्क है, ठीक है, और मैंने इसको एक बार फिर कॉपी कर लिया ताकि ये लगे कि ये वाकई ही बहुत किसी डीप जगह से आ रहा है, क्योंकि डायमेंशंस मोस्टली आउट ऑफ लाइट होती हैं, मतलब विदाउट लाइट, आउट ऑफ लाइट, विदाउट लाइट। सो एंड उसके बाद जब मैं ये सारा कुछ कर चुका, तो आई रियलाइज कि जब अगर मेरे पोर्टल में से निकल रहा है और उसके ऊपर रिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है जिनकी लाइट की, तो इस हाथ पे लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, तो एक एडजस्टमेंट लेयर बनाई लेवल्स की, उससे मैंने इसकी लाइट एडजस्ट कर ली। ये तो हो गया हमारा हाथ। आई थॉट कि अभी भी इसमें कमी है, पहले मैं इसको ऐसे अपलोड करने लगा था, लेकिन बहुत सारी कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया कि एक और थिंग जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यहाँ पे फेस पे देखें, और इग्नोरिंग दिस दाना जो कि अभी भी इधर निकला हुआ पड़ा हुआ होगा, कि मैंने यहाँ पे लाइट ऐड की थी, ठीक है। यहाँ पे लाइट कैसे ऐड की थी कि आप यहाँ पे सिर्फ एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएं, आप एडजस्टमेंट लेयर से बना लें, आप वाइट कलर की यहाँ पे लेयर बना लें, किसी तरीके से भी आपने इसमें लाइट ऐड करनी है, जो कि मैं आज मैंने लेवल से की थी, जो मैं नीचे बता चुका। लाइट इसलिए ऐड की ताकि पता चले कि चेहरे पे पोर्टल की लाइट आ रही है। ओके, अभी ये रियल नहीं लग रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ और मैं इस लेयर को ऑन करूँ, तो आपको यहाँ पे ये स्पार्कल्स नजर आएंगे, दिस फायर स्पार्कल्स। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एसेट्स मिलते हैं, ये मैंने यूज किए, मेरे पास एस्टल पैक है, उसमें ये एसेट्स थे, ये वहाँ से मैंने यूज़ करके इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ये फायर स्पार्कल्स आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये PNG इमेज होगी या फिर एक ऐसी इमेज होगी जिसको आप कर सकते हैं लाइटर कलर लाइक इन स्क्रीन, और इस इन ऑप्शन को यूज़ करके आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ की बीच में, और फिर मैंने अब इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें एसेट्स ऐड करने शुरू करता गया। आई विल टॉक अबाउट दिस फोटो filter later in the video. Okay, so again some more fire sparkles you can see here, some more fire sparkles and some more fire sparkles, ताकि बहुत अभी भी एक मुझे ऐसे लग रहा है दोबारा देख कि इसमें और ज़्यादा होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने जनाब ये क्या किया, ओके, दिस इज अगेन अ थिंग, लेट मी ओपन एन एस्ट्रल पैक। सो ये चीज़ थी, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप गौर से देखें, जूम इन, तो ये चीज़ है जो इफेक्ट बना रही है उसके अंदर खींचने का, ठीक है, और उसको एक एलियन वाइब देगी। सो आई कंबाइन दिस, और इस पे मैंने इफेक्ट क्या लगाया ये मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको कंट्रोल T करें, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाएं, डिस्टॉर्ट में जाएं, तो एक पोर्टल में से जब भी कोई चीज़ निकलती है तो इट्स लाइक श्रिंकिंग इन इनसाइड एंड going outwards on the outside, okay? So I made it like this, so just like this, so it portrays the fact that अंदर खींची जा रही है चीज़ और वो पतली हो रही है वहाँ से, ठीक है। और then I just used some masking to get it off, and then I used
then I went to layer, adjustment, hue and saturation to change its color to a red. Okay, so I use this, and this is again a solid layer. You have to tweak it a lot to make it realistic. Even now it's not perfectly realistic, but you have to tweak a lot. So ये एक solid layer again use की मैंने just to make the shadows, the red color shadows a lot more. Okay, so we are going up, and this is the same thing inverted on the other side, and tweak it so that it looks realistic. This thing right here makes you feel like कि मेरा हाथ जो है वो मुड़ रहा है, ठीक है, तो उसी को आगे यूज किया कि मुड़ता हुआ ही निकल रहा है यहाँ से, क्योंकि ये लाइटिंग उसकी ऐसी उसी फाइल, और वहाँ से और पार्टिकल्स लिए और वो इधर डाले और उनको मैनिपुलेट किया यूजिंग ट्रांसफॉर्म टूल्स टू मेक इट फील रियल, एंड यू गेट द रिजल्ट। आफ्टर इट, आप जब ये सारी एडिट कर चुके होते हैं तो लाजमी है कि आप एक ओवरऑल फोटो फिल्टर डालें ऊपर, ताकि ना वो एक स्मूथ इफेक्ट रहे कि आप लगे कि ये इसी पिक्चर का सब कुछ हिस्सा है। हालांकि ये और अच्छा डाला जा सकता था, लेकिन आई मेड फोटो फिल्टर, ब्लू फोटो फिल्टर, या आप यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा आप यहाँ पे ब्लूइश टच देख सकते हैं, ब्लूइश ब्लू, सो दैट इट लुक्स लाइक the light is transitioning. So I think so that's all how you can convert this boring picture into a really artistic one. So I won't make it long. If you like the tutorial, do give me a thumbs up, and अगर आपको कुछ नहीं समझ आया इसमें से तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मुझे मेरे फेसबुक पेज पे आ जाएं, मुझे वहाँ पे पूछ लें कि आपको क्या नहीं समझ आया, ज़रूर मैं कुछ ना कुछ भी मैं छोड़ गया हूँगा। तो I'll make more content like this if you want me to. So then I'll make tutorials, of course. If you like what I made, I'll post it in groups. I'm just making this video for the few 4 to 5 people, I think so. They said they wanted a tutorial. So hope this helps you, and just make good content and keep creative. Thank you.